In the pulse, we are focusing on three things. Number one, shape of the pulse, convex, concave. Convex means excessive condition, concave means deficient condition. Convex, excessive condition, concave, deficient condition. Second, we are focusing on the jump of pulse. हम जंप पर फोकस करते हैं, जंप jump of pulse. And third thing, we are focusing on level of pulse. लेवल की बात अभी हम करेंगे. लेवल लेवल का मतलब है कि ऊपर कैसी पल्स है और अंदर कैसी पल्स है, वो लेवल होता है. वैसे तीन लेवल होते हैं, जनरली देयर आर थ्री लेवल, बट वी कैन अंडरस्टैंड इन ए वेरी सिंपल वे. हम पल्स को ऊपर चेक कर रहे हैं तो कैसी है, और अगर हम दबा रहे हैं अंदर कैसी है. So we are trying to understand two levels only. Superficial and deep level. Generally there are three levels. Upper level, middle level and the lowermost level. तीन लेवल होते हैं. तो अब हम तीनों के बेस पर, तीनों के आधार पर हम 6 प्रकार की पल्स समझेंगे. तीनों के आधार पर मीन्स शेप, जंप, लेवल. Why? Basis on all the three conditions. All the three conditions, I will tell you once again. The condition number one, shape. Convex pulse or the concave pulse. Okay. अगर पल्स ऊपर उठ रही है तो वह है एक्सेसिव एनर्जी को दर्शाती है. So convex and concave. This is the shape of pulse. So this is the excessive condition and this is the deficient condition. Then we are going to check jump of pulse. कि पल्स का जंप कैसा है, whether the strong jump or weaker jump. Okay, only jumping till here. We are seeing the jump of pulse. Third, we are going to check the level of pulse, like upper level, middle level, lower level. There are three levels. Generally, we can check, okay, upper level, then press deep level. इतना भी चेक करें तो बहुत कुछ पता चलता है. Some pulse are available on the upper level, but disappear on the deeper level. So we'll see as per the level. So this is the chart. This is the wrong way to hold the pulse that you are holding from the small finger side. This is the wrong way. The right way, either you hold like this or you hold like this. In the TCM, we are holding both hand pulse. We are holding from the radial side. हम radial side से hold कर रहे हैं. So we have done the preparation and all. Yesterday we have seen the Guan pulse. कल हमने Guan pulse की बात कही थी, shape के बारे में समझा था. Now today we will be understanding the 6 types of pulse. So the pulse number 1, FST. We are showing it FST or the fast pulse. Second, SLO, slow pulse. Third, STR, strong pulse. FLO, floating. EMT, empty.
SLP is slippery. So we are showing with these shortcut sign means FSG means fast pulse. So let's discuss first two pulse. पहले हम पहली दो पल्स के बारे में समझते हैं. We are checking near what pulse rate only. हम pulse rate की बात कर रहे हैं. We are checking about the pulse rate in these two pulse. Whether the pulse rate is 72 per minute, okay, it is normal. 78 per minute, okay, it is also normal. Okay, 80 per minute, okay, we can consider it normal. Because ideal is 72, but 72 to 80 normal. Or it is 68, we can consider normal. Even 64, we can consider normal. Little bit here and there can be considered normal. Because many persons are sporty, for them 64 might be normal. But if the pulse rate is too high or too low, then we are telling it's not the normal. अगर मानो किसी की pulse rate 90 से ज्यादा है, 90 beat per minute, 90 plus beat per minute, we are telling it is a fast pulse. And if it is someone is having the 60 beat per minute pulse less than it, then we are telling it slow pulse. तो हम pulse को गिनते हैं. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप 1 मिनट तक गिने, आप 30 सेकेंड गिन सकते हैं. 30 seconds, you count the 30 seconds and just double it, then you will reach on the 1 minute. If the pulse is 100 per minute, suppose 100 beat per minute, so it is coming in the fast pulse. Then we will telling this is the heat syndrome. There is excessive heat or inflammation somewhere in the body. कि ये inflammation है भाई, कहां पर है? जहां पर हमारी उंगली है, where we are keeping the finger. We are keeping the finger on the on the position of chun or the position of guan, on the position of chi, chun guan chi. Then we are feeling the pulse, fast pulse. Or sometimes we can see the fast pulse everywhere. That is the heat syndrome. गर्मी बढ़ गई है, heat बढ़ गई है, inflammation हो गया है. Yeah. Now, if the pulse is slow, 60, less than 60 per minute, maybe 58 per minute, or even sometimes 60, sometimes 62 per minute also. It depends on the person. If the person is not sporty, then 62 per minute also the less pulse. अगर व्यक्ति sporty है, तो 60 per minute को normal हम consider कर सकते हैं. क्योंकि जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, उनके योगासन करते, योग प्राणायाम करते हैं, उनका सिस्टम थोड़ा कम पल्स रेट में भी अच्छा काम करता है. एंड मेनी पर्सन हैविंग लो पल्स रेट. अदरवाइज द पर्सन इज नॉट स्पोर्टी, 62 इवन 64 per minute pulse might be low. It's a cold syndrome. इसे कहते हैं कि ठंड बैठ रही है. The cold is obstructing the circulation, or we can tell reduce yang energy. Yang energy reduce हो रही है. Maybe heart yang is reducing. Maybe spleen yang is reducing. Some yang is reducing. If the pulse rate is less than 60 per minute, but we have to be sensitive. It's not exactly 60. It might be 62 per minute. Also can be considered as a low pulse. हम 62 को भी as a low pulse count कर सकते हैं. It depends on the body. Okay. So now the third number pulse, that is strong pulse. अब जो तीसरी पल्स है, वो कैसी पल्स है?
that is a strong pulse. That is jumping and hitting your finger back. वो जंप कर रही है और आपकी फिंगर को हिट कर रही है बैक. स्ट्रॉन्ग पल्स, ये आपकी फिंगर को हिट कर रही है. वी आर टेलिंग STR, स्ट्रॉन्ग पल्स. वी आर फीलिंग वेरी फोर्सफुल एंड पाउंडिंग. ऐसे पाउंडिंग जैसी लग रही है कि कोई ऊपर की ओर धक्का मार रहा है, जैसे ये जंप कर रहा है. पर someone is jumping upward and pushing your finger. आपके फिंगर को पुश कर रहा है. That is a jump. If it is jumping your finger, that is strong pulse. Feel forceful and pounding under light or heavy pressure. Whether you put the light pressure or the heavy pressure, आपको ये heavy feel हो रही है. The meaning of this excessive syndrome may be some strong pathogenic factor like the heat or the flame or the chi is excessive. कि कोई ना कोई ऊर्जा की अधिकता है. मे बी लिवर ची स्टैग्नेशन, मे बी देयर इज ए फ्लेम हीट इन द बॉडी, मे बी देयर इज ए एक्सेसिव ची इन द सम एरिया. कुछ एक्सेसिव सिंड्रोम है. वी हैव टू सेट इट. रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू डू टू थिंग्स. First, we have to keep the light touch, we will feel strong. Then deep touch, still we feel strong. Until and unless we feel strong in two condition, we cannot tell it strong pulse. Strong pulse means which is strong, which is pounding, which is pushing your finger up, which is very forceful on the superficial level as well as on the deep level. जो superficial level में और डीप लेवल में, दोनों ही लेवल में पाउंडिंग है, स्ट्रॉन्ग है. या तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग पल्स. इट मींस सम एक्सेसिव सिंड्रोम इज देयर, सम फ्लेम इज देयर, सम chi is very high, chi high there, flame high, chi high, something high, heat high, high heat. कुछ बढ़ गया है, कुछ ना कुछ ज्यादा बढ़ चुका है. So this is called strong pulse. Strong pulse. Main focus, forceful and pounding at light and heavy pressure. Light and heavy pressure. कि आपने थोड़ा दबाया तब भी, अधिक दबाया तब भी, it means either the heat or the flame or the chi is excessive. So we are telling is strong. But suppose you're touching the pulse and you're feeling very strong. आपने इस पल्स को टच किया, it is very strong, very forceful. But as you press it, आपने heavy pressure दिया, as you press it, pulse disappear. आपने जब पल्स को फील किया सरफेस पर, it is very strong pulse. But as you press it disappear, then it is not the strong pulse. Strong pulse should be strong at the superficial level as well as the deep level. तो अगर आपने दबाया हल्का और ये स्ट्रांग है, लेकिन डीप दबाया तो गायब हो गई, इसका मतलब बस फ्लोटिंग पल्स है. इट्स अ फ्लोटिंग पल्स. ये केवल ऊपर फ्लोट कर रही, अंदर नहीं है. ये अपनी जगह पर ही है, फिक्स. जैसे कोई बोट लेके पानी पे तैर रहा है, बोट पानी के ऊपर है, अंदर नहीं है. So floating pulse. Floating pulse means just floating like a boat on the surface level. You are feeling very strong at the surface level, but weak with the deeper pressure. आपने जैसी दबाया पल्स गायब. केवल सतह पर मजबूत है लेकिन गहराई में कमजोर है. इसका मतलब है कि कोई बाहरी आक्रमण है. There is attack on the body, external attack,
एक्सटीरियर सिंड्रोम कि मे भी कुछ फ्लू का आक्रमण हो गया, कुछ सर्दी का आक्रमण हो गया, कुछ वायरस का आक्रमण हुआ, सम वायरल अटैक, बैक्टीरियल अटैक, पैथोजेनिक अटैक, द अटैक ऑफ विंड कोल्ड, द अटैक ऑफ विंड हीट ऑन द बॉडी. The person is feeling some shivering, person is feeling some flu, person is feeling something like external attack. ये एक्सटर्नल अटैक है. ओके, तो ये अंतर था स्ट्रॉन्ग में और फ्लोटिंग पल्स में. नाउ व्हाट इज एम्प्टी पल्स?